Hello, dear students. Today we are going to study a story, The Inspector of Schools, written by M. Athar Tahir. This is a story which depicts bad conditions of the schools. First, I'll read out the text for your convenience and then summarize in English for you and then explain it in Hindi as per your feedback. So I start this text. In a perfect world, every child should have an education. There would be a school in a small village with excellent teachers, a good strong building for the schoolroom, and books for every child, all paid for by the government, but it is not a perfect world. The inspector, walking through the dusty fields to find the next school on his list, knows this very well. The inspector asked the man who was walking down the village street about the school. Yes, there is a school here, somewhere outside the village, I think. The villager pointed a work-worn, dusty finger to the narrow road leading away from the village. The village streets were muddy, where water from the mud houses had leaked out, and dusty everywhere else. They ended suddenly where the fields began. The inspector started walking down a path between the two fields. In the distance he saw a man on a bicycle coming his way. The man stopped at the inspector of schools, came near, got off his bicycle, and respectfully stood to one side of the path. Where's the school? School, Sahibji. Yes. You see that shisham tree over there? He said, pointing to a large tree several fields away. It's under that. Would you come along and show me? The villager was only too happy to help the city babu. If the students and master or passing neighbor saw him with the babu, his importance would surely grow considerably in the village. He held his head higher at the thought. They walked together. Very good man, Sahibji, the master works very hard. The inspector of schools did not reply. This chasing of schools across the area was becoming rather exhausting. In dirty towns, in smelly places, in distant villages where his car couldn't go, and there was so much wrong with them, all so depressing. So this is the first slide, and in this opening line of the first slide, they start with a vision. Vision means a dream about education, but soon the author realizes that this is not a perfect world. The inspector of a school asks a man the location of the school in that village, but the dirty surroundings are repelling for the inspector. Now I'll explain in Hindi as per your demands. In a perfect world, every child should have an education. अगर हम किसी परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना करें तो हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए. देयर वुड बी स्कूल इन एवरी स्मॉल विलेज. छोटे छोटे गांव में स्कूल हों, अच्छे टीचर्स हों, ए गुड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग फॉर द स्कूल रूम, अच्छी बिल्डिंग हो, बुक्स फॉर एवरी चाइल्ड, बच्चे के लिए हर बच्चे के लिए बुक्स हों, ऑल पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क मिले. बट इट इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड. लेकिन ये संसार परफेक्ट नहीं है. The inspector, walking through the dusty fields to find the next school on his list, knows this very well.
ये जो स्कूल के निरीक्षक महोदय हैं, इनको पता है कि ये संसार परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत खामियां हैं. The inspector asked a man who was walking down the village street about the school. एक आदमी से पूछता है कि स्कूल कहाँ है, तो वो आदमी कहता है कि हाँ, एक स्कूल है और वो गांव के बाहर है शायद. और वो विलेजर जो है पॉइंटेड वर्क वन डस्टी फिंगर, उसकी एक काम, वर्क वन का मतलब काम से जीर्ण शीर्ण हो चुकी हुई धूल से भरी हुई अंगुली को वो एक सकड़ी रोड की तरफ इशारा करता है. और विलेज स्ट्रीट्स जो थी गांव की वो बिल्कुल कीचड़ से भरी हुई थी और मड हाउसेस जो मिट्टी के घर थे उनमें से वो पानी निकल रहा था और डस्टी हर जगह धूल मिट्टी थी. दे एंडेड सडनली वेयर द फील्ड्स बिगैन. और वो चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां से कि घर वगैरह खत्म होकर के और खेत शुरू हो गए थे. The inspector started walking down a path between two fields. दो खेतों के बीच में वो जा रहा था. In the distance he saw a man on a bicycle coming his way. डिस्टेंस में उसने देखा, दूर से उसने देखा कि एक आदमी आ रहा है. वो आदमी स्टॉप्ड, रुक गया उसको देख करके और उसने एक साइड में खड़ा हो गया रास्ते के. वेयर इज द स्कूल? स्कूल साहिब जी. उसने कहा यस यू सी दैट शीशम ट्री. स्कूल तो वहां है जहां शीशम का पेड़ है. और उसने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया. वुड यू कम अलोंग एंड शो मी? तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने पूछा कि मुझे आकर के बता दो कहाँ स्कूल है, दिखा दो मुझे. विलेजर वॉज ओनली टू हैप्पी टू हेल्प ए सिटी बाबू. वो बहुत खुश हुआ कि मैं शहर के किसी बाबू की हेल्प कर रहा हूँ. If the students and master of passing neighbor saw, अगर मुझे स्टूडेंट्स देखेंगे या मास्टर देखेंगे या कोई पास का पड़ोसी देखेगा इस बाबू के साथ में तो मेरी इम्पोर्टेंस श्योरली बढ़ने वाली है. He held his head higher at this thought. और इससे उसका इस विचार से उसका सिर गर्व से तन गया. They walked together. वो साथ साथ चल रहे थे और उसने तारीफ करी मास्टर की कि ही इज वेरी गुड मैन, वर्क्स वेरी हार्ड. द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स डिड नॉट रिप्लाई. उसने कोई जवाब नहीं दिया. द चेजिंग ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द एरिया वाज बिकमिंग रादर एग्जॉस्टिंग. और स्कूल को ढूंढना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना, ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग, थकाऊ था, उबा देने वाला था. इन डर्टी टाउन्स, गंदे गंदे कस्बों में, स्मेली प्लेसेस, बदबूदार स्थानों में, दूर दराज के गांव में जहां की उसकी कार नहीं जा सकती थी. एंड देयर वाज सो मच रॉन्ग विद देम. और ये सब कुछ उसके साथ बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. ऑल सो डिप्रेसिंग. और ये सब कुछ बहुत ही निराश करने वाला था. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट विलेज where he was going to inspect a school. Now the second slide, first I'll read it out for you. By now, after 3 years in the job, he should be used to it. But no, every school still hurts. Not enough books, local people who didn't care, lazy students, masters always wanting free meals and presents. It was all too much. What could he do? Recommend and recommend. And every recommendation was refused by the Planning and Development Department, which planned little and developed less. They passed fields which were green with young plants. At one place there was a small pool where water had gathered and insects were flying around the surface. They rose in a noisy cloud as the two men came closer. The inspector of schools waved with them
away from his face. The villager walked fast, and his loose bicycle bell rang madly as he pushed the bicycle along the uneven path. His colorless footwear had been repaired in several places. It was difficult to keep up with him. They crossed another field, and beyond it was the shisham tree. It was a shady tree at the edge of a field, which was now plowed and ready for planting. There was nothing there. The villager was disappointed. Now, this is the next slide, the second slide. In this slide, the author tells us that had been the inspector of the schools had been in that service for the last 3 years. But he couldn't get used to all these frustrating conditions. He recommended many things to the government, but the planning and development department refused his recommendations. The author depicts a very depressing picture of the villager and the surrounding of the villages, the mosquitoes, the gathered water, and many times repaired shoes. The villager took the inspector of his school to the shisham tree, but there was nothing under the tree, and the villager was disappointed by this. So, this is the summary which I told you. Now, I'll explain it in Hindi according to your demands. By now, अभी तक उसको 3 साल हो चुके थे इस जॉब में. उस इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को इस जॉब में 3 साल हो चुके थे. ही शुड बी यूज टू इट. अब तक आदत पड़ जानी चाहिए थी इन सबकी इस निराशाजनक स्थिति की, लेकिन नहीं. हर स्कूल इसी प्रकार से उसे दुख पहुंचाता था, क्योंकि न तो पर्याप्त किताबें होती थी, लोकल लोग जो थे वो ध्यान नहीं देते थे, बच्चे बहुत आलसी होते थे, मास्टर लोग हमेशा फ्री मील्स चाहते थे, प्रेजेंट्स चाहते थे. इट वॉज ऑल टू मच. ये बहुत ही बुरा था. अब वो क्या कर सकता था? रिकमेंड एंड रिकमेंड. इस कंडीशन में वो गवर्नमेंट को अपनी सिफारिशें या अपने लेटर्स लिख के भेजता था, रिकमेंडेशंस भेजता था, और हर रिकमेंडेशन जो भी वो सिफारिशें भेजता था वाज रिफ्यूज, जिसको मना कर दिया जाता था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, विच प्लान लिटिल. जो डिपार्टमेंट बहुत कम प्लानिंग करता था और डेवलप लेस, और विकास भी कम करता था. दे पास्ट फील्ड्स विच वर ग्रीन. वो दोनों विलेजर और वो मास्टर स्कूल इंस्पेक्टर दोनों खेत में से जा रहे थे. यंग प्लांट, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे थे. एट वन प्लेस देयर वॉज ए स्मॉल पूल. एक छोटा सा पूल था, पानी का तालाब सा था. वेयर वाटर हैड गैदर्ड. जहाँ पानी इकट्ठा हो गया था. एंड इंसेक्ट्स वर फ्लाइंग अराउंड द सरफेस. और कुछ कीड़े यानी कि मच्छर उसकी सतह पर, सरफेस के ऊपर उड़ रहे थे. दे रोज इन ए नॉइजी क्लाउड एज द टू मैन केम क्लोजर. और वो उड़ने लगे मच्छर जबकि वो वहां से गुजरे पास से. द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वेव्ड एट देम. और उनको हटाया. इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वेव्ड देम, उनको हटाया अपने फेस पे से उन मच्छरों को. द विलेजर वॉक्ड फास्ट. वो बहुत तेज चल रहा था. एंड हिज लूज बाइसिकल बेल रैंग मैडली. और उसकी जो घंटी साइकिल पर थी वो बहुत लूज कसी हुई थी, इसलिए वो बहुत ही जोर जोर से बज रही थी. एज ही पुश द बाइसिकल अलोंग द अनइवन पाथ. उबड़ खाबड़ रास्ते. अनइवन पाथ मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जब वो साइकिल को तेज तेज ले जा रहा था तो उसकी घंटी बहुत जोर जोर से बज रही थी. हिज कलरलेस फुटवियर हैड बीन रिपेयर्ड इन सेवरल प्लेसेस. और जो भी कुछ उसने फुटवेयर पहन रखे थे वो बहुत ही स्थानों से उनकी मेंडिंग हो रखी थी, यानी कि वो सुधारे गए थे.
रिपेयर किए गए थे. इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप अप विद हिम. और उसके साथ चलना बहुत मुश्किल था, वो बहुत तेजी से चल रहा था. दे क्रॉस्ड अनदर फील्ड. और दूसरे खेत में से होते हुए बियॉन्ड इट वॉज द शीशम ट्री. और जिस शीशम ट्री का पहले जिक्र आ चुका है वो शीशम ट्री अब आ गया था. इट वॉज ए शेडी ट्री. वो बहुत ही छायादार पेड़ था. एट द एज ऑफ ए फील्ड, एक खेत के किनारे पर, विच वॉज नाउ प्लोड. और उस खेत को मतलब जोत दिया गया था और रेडी फॉर प्लांटिंग, और उसकी जुताई हो चुकी थी और उसे प्लांटिंग यानी कि खेत में बीजारोपण करने के लिए, पौधे लगाने के लिए तैयार था. देयर वॉज नथिंग देयर. लेकिन उस खेत के वहां तो कुछ भी नहीं था, स्कूल भी नहीं था. द विलेजर वॉज डिसअपॉइंटेड. ये देख करके जो गांव वाला उनको स्कूल दिखाने लाया था शीशम के पेड़ के पास वाला, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड, निराश हुआ वो विलेजर. तो अब दिस इज द second slide of this story, and today we will end here our lesson and will continue in the next video. Till then you should study more and more and prepare for your exams.